जी स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज और एक्सरसाइज के हम करने लगे हैं क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 12 के। पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का 12.1, द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और नॉन जीरो इन दिस रीजन, एक्सप्लेन। जी स्टूडेंट्स, पोटेंशियल जो है वो उसने कहा है कि थ्रू आउट द रीजन जो है वो कांस्टेंट जा रहा है, ठीक है। स्पेस के अंदर जो है हम कह लेते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट करनी है वहां पे, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होती है? चार्ज की वजह से, ठीक है। और उसने कहा कि स्पेस के अंदर हमारा जो पोटेंशियल जो है ना वो थ्रू आउट द स्पेस जो है वो, या आप कंसिडर कर लें कि हमारे पास ये स्पेस कंपोनेंट हमने लिया है, तो थ्रू आउट द स्पेस हमारे पास ये पोटेंशियल लाइंस ले लें, ठीक है। पोटेंशियल थ्रू आउट द रीजन जो है वो क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। तो उसने कहा इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और नॉन जीरो, एक्सप्लेन। तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस जो है, क्योंकि थ्रू आउट द रीजन कांस्टेंट है, यहाँ पे इसका हमने आंसर इस तरह लिखना है। आंसर लिखने से पहले मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो कांस्टेंट जा रहा है, इसका मतलब है हम किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर स्पेस के अंदर जहां पे हमारे पास पोटेंशियल कांस्टेंट जा रहा है थ्रू आउट, हम कोई भी दो पॉइंट कंसिडर करके उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करें। लेट्स सपोज कि यहाँ पे हमारे पास V1 पोटेंशियल है, यहाँ पे V2 पोटेंशियल है, तो यहाँ पे अगर हम डेल्टा V जो है फाइंड आउट करें, क्योंकि कांस्टेंट जा रहा है, इट मींस दैट कि हमारे पास V1 इक्वल आना चाहिए V2 इक्वल आना चाहिए V के, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू आउट द रीजन कांस्टेंट है, थ्रू आउट द स्पेस कांस्टेंट है। तो हम कहीं भी पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लें, कहीं भी पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, वहां पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। तो एग्जैक्टली हम यहां पे कह सकते हैं V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V। सो अगर आप इसका डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहे, पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप मालूम करें, तो V2 minus V1 should be equal to 0 because V2 is also V and V1 is also V. It means that our potential difference would be 0. So now let's suppose how can we find out the what? How can we find out the one thing? This is the electric field. We know that. Okay, electric field is equal to minus del V over D, क्योंकि हमने फाइंड आउट किया है ये रिलेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी मैग्नीट्यूड लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ रहा है ओवर डी, तो इट मींस दैट हमारी जो ई है वो भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। यहाँ पे आपने आंसर इसका कुछ इस तरह लिखना है, सपोज एज वी हैव गिवन दैट potential difference or the potential is throughout the region. Actually the potential is throughout the region is constant, is uniform. So suppose 2 points in a space having potential difference V1 and V2 respectively. So potential, okay, potential with respect to these 2 points is V1 and V2 respectively. So their potential difference would be equal to 0 because V1 equal to V2 equal to V. And now we know that electric field intensity or the electric field is equal to minus delta V over D. ये रिलेशन हमने पढ़ा था पोटेंशियल ग्रेडियंट की फॉर्म में। पोटेंशियल ग्रेडियंट में हमने ये रिलेशन ड्राइव किया था वहां पे। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या आएगा? 0. So we can say that electric field is 0 throughout the region where potential is constant. Now we are going to solve next question. ये क्वेश्चन जो है बच्चों आपके बोर्ड के एग्जाम के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आते हैं, तो इसलिए आपने इनको इतना एक्सप्लेन नहीं करना, जितना कि एग्जैक्ट आंसर बनता है उतना ही करेंगे। Now we are going to answer next question 12.2. I'm going to read the statement. Suppose that you follow an electric field line due to positive charge. Okay, so positive point charge, do electric field and the potential increase or decrease? Suppose that you follow an electric field due to a positive point charge. So explain that. What? Explain that. Do electric field and the potential increase or decrease? नाउ स्टूडेंट्स, इसमें हमने क्या करना है, हमें दिया गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारे पास यहाँ पर, सपोज दैट फॉलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जो होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस रेडियली क्या होती हैं? आउटवर्ड होती हैं। ओके, सो यू आर फॉलोइंग, यू आर हेयर, सपोज दैट वी आर हेयर, हम यहाँ पे जो है
हम इसको फॉलो करते हुए रेडियली आउटवर्ड जा रहे हैं, ठीक है। उसने ये कहा है कि सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, डू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज। ओके बच्चों, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पढ़ा था। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या पढ़ा था? हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्राइव किया था तो हमने फार्मूला पढ़ा था E इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q over R square. So this is the formula of the इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारे पास जो है ये भी कांस्टेंट है, ये सारा फैक्टर कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। सो हमारे पास ये जो है ये वेरी कर रहा है इनवर्सली ऑफ द स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हम देखें हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इनवर्सली है किसका? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। मीन टू से अगर हम जितना डिस्टेंस यानी जितना r जो है हमारा फ्रॉम द पॉइंट चार्ज बढ़ता जाएगा उतना डबल जो है उसका अगर हम ले लें यानी कि उसका स्क्वायर ले लें, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कम होती जाएगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है इनके दरमियान। इट मींस दैट if we follow an electric field and goes away or follow the electric field due to positive charge, because we know that positive charge की जो field होती है वो outward होती है, radially outward होती है। It means that we are going to away from the point charge. So we know that close the point charge, close the charge field is maximum and away the charge field is minimum. So we can say that field is गोइंग टू डिक्रीजेस, यानी फील्ड जो है डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। सिमिलरली जो है हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसका फार्मूला क्या आता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q over R। तो बच्चों यहां पर जो है हमारे पास Q over R का मतलब यह है कि हमारा पोटेंशियल जो है ये भी इनवर्सली है, यानी रेडियली पोटेंशियल जो है वो भी क्या होता है? डिक्रीज होता है विद द इंक्रीज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स और फ्रॉम द point charge. So we can say that, what we can say that you can use your own words, you can answer in your own words like this. We know that from the relation equation 1 and equation 2 we can see that E is inversely proportional to the square of the distance. Similarly V, which is a potential, which is a electric potential, also inversely of the distance. So it means that if R is increases, so definitely E and V respectively, E and V, E is electric field and V is a potential. So E and electric field and the potential or potential difference, whatever electrical potential will decreases. Now we are going to solve next question. Let's see what is the next question. Okay, next question is 12.3. I'm going to read the statement. How can you identify that which plate of the capacitor is positively charged plate? How can you identify which of the plate of the capacitor is the charged plate? Okay बच्चों, उसने कहा है हमारे पास एक कैपेसिटर है. Let's suppose we have a parallel plate capacitor. Okay, here we have a parallel plate capacitor. Okay guys, we have a parallel plate capacitor. Here you can see that this is a parallel plate capacitor. Now if we put, how can you find out? Okay, we don't know the polarity of the circuit. हमें नहीं पता पोलैरिटी जो है वो सर्किट की कौन सी है, ठीक है. उसने कहा हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है, हमें नहीं पता, ये वायर्स जो हैं इन्फिनिट वायर्स आ रही हैं, हमें सर्किट का नहीं पता, हमें नहीं पता कि कौन सी प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज और कौन सी नहीं है. ठीक है, ये तो मैंने पहला प्लेट कैपेसिटर बनाया था, हमें इसका नहीं पता अभी. ओके, वी डोंट नो द नेचर ऑफ द चार्ज ऑन द प्लेट्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. सो व्हाट शुड वी डू? We should do that. We can put according to electrostatics, हमने पता किया था कि सेम चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, सो हम क्या करेंगे, टू टेस्ट द प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वी put a positive test charge. Okay, we put a positive
पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ओके, नाउ अब क्या होगा, अब हम देखेंगे इसकी रिलेटिव मोशन को। इसकी रिलेटिव मोशन क्या है? अगर ये चार्ज जो है जिस प्लेट की तरफ मूव करेगा, डेफिनेटली दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज अ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, इट विल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, ऑपोजिट चार्ज्ड प्लेट। इट मींस दैट कि इसने नेगेटिव प्लेट की तरफ जाना। सपोज दिस इज नेगेटिव प्लेट, तो इसने मूव करना है इस तरफ, जबकि इसकी ऑपोजिटली चार्ज प्लेट कौन सी होगी? पॉजिटिव चार्ज होगा इसका, सेम टू सेम जो है जिसपे ऑपोजिटली इसने मूव करना है, यानी कि इट मींस दैट कि इसकी सेम चार्ज फील्ड जो होगी वो इस तरफ होगी, जो इसको रिपेल कर रही होगी। दैट मीन्स के पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमने रखा, हमें नहीं पता कि कौन सी पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है, हम मालूम करेंगे बाय ऑब्जर्विंग द व्हाट, बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज। जिस तरफ ये मूव करेगा वो नेगेटिव प्लेट होगी, और जिससे अवे ये मूव करेगा वो उसकी पॉजिटिव प्लेट होगी। इट मींस दैट इसकी जो बिहाइंड प्लेट जो है ये वाली, ये क्या है? पॉजिटिवली टेस्ट, पॉजिटिवली जो है वो चार्ज प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो यू कैन यूज योर ओन वर्ड्स इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द nature of the charge on the plate, or you can also say that which plate of the capacitor is positively charged. We put a positive test charge between the plates. Now we will observe the motion of the charge. If the charge is moving towards the one plate, it means that that plate polarity, or that plate is negatively charged, and the opposite plate will be positively charged. So we can find out the answer. You can use your own words, students. Now we are going to discuss next question, 12.4. So let's see what will be the next question. The next question is, describe the force on a positive point charge when placed between parallel plates. I shouldn't remove that diagram because the next question is concerning to the last one. So describe force or a forces on a positive point charge when placed between parallel plates. Number A, with similar and equal charges. Okay, number A with similar and equal charges, number B with opposite and equal charges. Let's see. Let's suppose and solve first A with similar and equal charges. With similar and equal charges. Okay, students, we have our two parallel plates. Okay, now we charge these plates with similar and opposite charge, with similar and equal charge, sorry, with similar and equal charge. Okay, we have charged these two plates with equal and similar charge. Okay, now we put a positive charge between them. We have put the positive charge. Okay, put the positive charge between them, and what will be the force or forces on these two? Okay, due to these same but equal charges on this test charge. Okay, now you can see that this plate will repel with this. Let's suppose this force is 1, and this plate will also repel by a force, electrostatic force. Suppose this is F2. So here we have given that these two plates have same and equal charge. It means that they will exert same, they will push this charge, they will exert the same force, but these two forces are equal in magnitude but opposite in direction. So what will be the resultant force? It means that our resultant force would be equal to F1 minus F2, as we have seen that F1 is equal to F2 according to given condition. According to given condition in the question, with similar but equal and same charge, according to given condition of question.
you can see that F1 is equal to F2. It means that the resultant will be 0. And what will be the resultant? What will be the consequences? The consequences is that the positive charge will not move on either of the two sides, nor left nor right. So it means that the charge will be static. There will be no motion in the charge. Charge जो है वो move नहीं करेगा, motion नहीं आएगी, क्योंकि दोनों तरफ forces जो हैं वो क्या हैं? Equal हैं, क्योंकि हमने दोनों तरफ जो पैरेलल प्लेट्स के ऊपर जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो इक्वल है और सेम है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है. नाउ लेट्स सी द सेकंड assumptions, the second postulate or the second point. We will draw a new one. Okay, so the second is the B part with opposite and equal charge. Suppose B part with opposite and equal charge. So let's see what will be the effect of these oppositely charged and equally oppositely charged plates on a positive test charge. Okay, suppose students, we have a two oppositely charged but equal charge, amount of charge but opposite charge. We have charged these two plates equally amount with respect to the charge but oppositely charged. Now we put the positive charge here. So now what will be the electric field direction, or what will be the force? Now you can see that this will exert a force in this direction. Okay, and this negative charge plate will also attract this charge towards itself with some force, which is also F. Okay, so it means that हमारी जो positively charged plate है वो इसको उसी फोर्स के साथ रिपेल करेगी जिस फोर्स के साथ हमारी नेगेटिवली चार्ज प्लेट जो है उसे अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी. ये दोनों फोर्सेस जो हैं सेम लाइन के अंदर होगी, इनकी अमाउंट भी क्या होगी, सेम होगी. देन वी कैन राइट दिस, द रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू F1 प्लस F2, बट F1 is equal to F2 is equal to F. So it means that this is equal to F plus F. So what does it mean? It means that we have 2 times force. So जब हमारे पास चार्ज जो है वो 2 इक्वल अमाउंट चार्ज ऑपोजिटली चार्ज के दरमियान प्लेट्स के दरमियान रखा जाता है तो उस पर लगने वाली फोर्स होती है वो डबल होती है. दिस इज इक्वल टू 2 1. Okay students, now we are going to solve or answer the next question, which is 12.5. Let's see what is the next question. The statement of this question is electric field or electric lines of force never cross each other. Electric lines of force never cross each other. Why? Students, इसका हमने आंसर जो था जब हमने characteristics of the properties of the electric field of lines, electric force of lines की characteristics पढ़ी थी, properties पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था, हमने एक postulate पढ़ा था. We studied one postulate, one property that the field lines, electric field lines never cross to each other. क्यों? Because why? Now you can see that the electric field of lines are radially outward from the point charge or a source. So you can see that. What is your observation? Okay, you can observe. क्या ये cross कर पाएंगी? क्या ख्याल है? You can see that every electric field of line have only and only one direction. Only and only have one direction. So what does it mean? These lines of force, these electric field of lines never cross to each other because they have only and only one direction of propagation radially outward away from the point charge, positive charge. So it means that they never cross to each other. So we can write this because
वाई के आगे लिखना, आप लिखना है इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस नेवर क्रॉस्ड ईच अदर बिकॉज, इससे पहले वाला मैंने लिखा हुआ आपने लिखा है, क्वेश्चन के अंदर है, बिकॉज दे हैव ओनली वन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन when electric field is uniform, due to a unit positive charge, you can also use your own words, and another answer you can also write, the electric field of lines have the direction making a tangent along the सर्कुलर पाथ, क्योंकि ये टेंजेंटली जो है आउटवर्ड जो है मूव करती हैं, ये सर्कल है हमारा, तो टेंजेंटली जो है इनकी डायरेक्शन जो है टेंजेंटली होती है, ठीक है। तो यू कैन यूज योर ओन वर्ड्स, जस्ट राइट दिस, दे हैव ओनली एंड ओनली वन डायरेक्शन।